دور ترى الشير دي او تشكل ده تجوز ما يركب له كله بتا دو كله अच्छा आपको स्लाइड नजर आ रही है Yes, sir. Yes, sir. अच्छा रिकॉर्ड स्लाइड शो हाँ याद है Bismillahirrahmanirrahim. Shear strength of soil. This is next chapter. We completed the consolidation chapter, and now this is lecture number 7. Shear strength of soil. Shear strength of soil is very important chapter because the failures that occur in the soil are strength related failure that occurs in the soil are due to the shear strength, right? When shear stress in the soil reaches the shear strength of the soil, there would be a failure, right? Because soil particles are soil is composed of soil discrete soil particles. So when there is a load that comes upon the soil, these soil particles slide one past another one, and there is a failure. There is a failure. There could be different types of failures. Many structures require the shear strength, like foundations, landslides, retaining walls. All the design of all these would require the shear strength parameters. If you know these parameters, you can design, you can find the bearing capacity of the foundation, you can analyze whether a slope would fail or not fail, and you can also design a retaining wall if you know the shear strength. And there are many other uses. There are few which you would study in this semester and some in the next semester. So these are some sketches. Like the first one is it is a foundation. There is a load, right? And it is assumed the saturated clay soil. So there could be a circular type of failure, right? This is a sliding surface. On this sliding surface, the shear stress is equal to the shear strength, and there is a sliding. This is a landslide or landslide. You see, this is the mass movement, soil mass movement along this shear plane. On this shear plane, the shear stress is equal to the shear strength of the soil. So there is a failure. This is a road embankment. You see, this is a road pavement, right? This is a road pavement, and it is a movement. You might have seen some instabilities along a highway that is built on an embankment. On this shear plane, the shear stress is equal to the shear strength, and there is a failure. It's a retaining wall. It's a gravity retaining wall. This is backfill, and this is a failure. This is a failure caused on this shear plane. The shear stress is equal to the shear strength, and there is a sliding of the mass, and there is a movement of the retaining wall. So these are some examples where the importance of shear strength is highlighted. So what is a shear failure? As I said, at any point on any plane within a soil mass,
when the shear stress becomes equal to the shear strength of the soil, the failure will occur at that point. So in summary, when shear strength is greater than applied shear stress, soil is safe. It's a safe condition. When shear strength is equal to the applied shear stress, failure would occur. Factor of safety, if you want to find how much my soil mass is safe, so the available shear strength divided by the shear stress defines the factor of safety against shear type of failure. Let's discuss what contributes to the shear strength of the soil, right? So, जी सर आपने कहा कि जब शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए, शेयर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए शेयर स्ट्रेंथ से, तो हमारे पास फेलियर होगा। उस फेलियर की वजह से हमारे पास सेटलमेंट होगी। तो अभी तक हमने जितनी कंसोलिडेशन पढ़ी उसमें तो हमने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ मतलब की बात नहीं की है। जी 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 एक बार फिर पूछें। सर आपने कहा कि हमारे पास जब शेयर स्ट्रेंथ मतलब कम हो जाए अप्लाइड शेयर स्ट्रेस से, तो हमारे पास फेलियर होगा और फेलियर से हमारे पास सेटलमेंट या कंसोलिडेशन होती है। सर नहीं नहीं, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को, जियोटेक्निकल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे या किसी बीम को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना, या सुपर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं या सब स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, तो दो मेजर क्राइटेरिया उसमें होती हैं, एक सेटलमेंट, एक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। बाज वक्त इस तरह होगा कि स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी मगर वो सेटल हो जाएगा, ठीक है ना, और या सेटल कम होगा मगर स्ट्रेंथ फेलियर उसमें हो। तो दोनों टाइप ऑफ फेलियर पॉसिबल हैं, आपको दोनों देखनी होंगी, सेटलमेंट भी देखना होगा और स्ट्रेंथ भी देखनी होगी। ये डिफरेंट क्राइटेरियाज है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ के हवाले से, सेटलमेंट के हवाले से हमने कंसोलिडेशन का चैप्टर पढ़ा, ठीक है ना, उसको फिर हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में फाउंडेशन पे कि कितना सेटल होता है कितना नहीं होता। और एक है स्ट्रेंथ रिलेटेड फेलियर, ठीक है ना, उसकी सेटलमेंट से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपको अलहदा उसको इवेल्युएट करना होगा। ये दोनों एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेटलमेंट के हवाले से तो कंसोलिडेशन हमने पढ़ ली, ठीक है। अब स्ट्रेंथ के हवाले से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। सर यहाँ पर सोइल की स्ट्रेंथ नहीं चेक करते, मतलब शेयर स्ट्रेंथ जो है जी सर, यहाँ पर हम अंडरग्राउंड जो सॉइल है इसकी शेयर स्ट्रेंथ चेक करते हैं। अगर शेयर स्ट्रेंथ कम हो मतलब वो फेलियर हो जाए तो कंसोलिडेशन नहीं होगी। नहीं, कंसोलिडेशन तो अलग फिनोमेना है, वो तो सिर्फ सैचुरेटेड सैंड या क्लेज में होती है, ठीक है ना। बाज वक्त इस तरह होता है कि मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फाउंडेशन बनानी, बिल्डिंग, ठीक है ना, आपने कोई फाउंडेशन या बिल्डिंग बनाई है तो वो 1 इंच या 2 इंच तो सेटल हो गई। आप कहेंगे कि अगर 2 इंच से ये ज्यादा सेटल हो गई, नहीं होनी चाहिए, 2 इंच आपकी लिमिट है, ठीक है ना। तो वो 2 इंच जो है ना, अभी उसकी फेलियर नहीं होगी, शेयर स्ट्रेंथ फेलियर में अभी ज्यादा टाइम है, अभी उस पे शेयर स्ट्रेंथ फेलियर नहीं हुई मगर वो सेटलमेंट रीच हो गई। तो पहला क्राइटेरिया आपने, तो दो क्राइटेरिया, जो भी पहले अखर होता है वो आपका गवर्निंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। जिस तरह आप कोई चाक ले लेते हैं, चाक एक ब्रिटल मटेरियल है, उसको आप उस पर फोर्स डालें, ठीक है ना, तो उसमें आपको कोई सेटलमेंट नजर नहीं आएगी और टक करके वो टूट जाएगी, ठीक है ना। तो इस किस्म की सॉइल जो हो वो कोई डिफॉर्मेशन आपको नहीं दिखाती, ठीक है, मगर उसमें फेलियर, शेयर फेलियर हो जाता है। जिस तरह एक चाक है, उसको ब्रिटल मटेरियल है। हाँ मान लो इसका नहीं और तो सही
Sí. Sí. रोला ओ सी क्या सर ठीक है। अच्छा जी, अब ये जरा इस शेयर स्ट्रेंथ जो हम कह रहे थे तो इस पे जरा डिलिब्रेशन करते हैं। Here you see in this slide we look into the fact that what contributes to the shear strength of any object. You can say there is one object and another object is laying on top of this. This is the weight or any normal load of this object. It could be weight as well as some normal load. And if you want to slide this, you have to apply a horizontal force, right? And if the horizontal force is enough to overcome the shear resistance at this interface, it would slide. So this is the sliding surface. This horizontal is the sliding surface. It is also called slip plane. Hello. फॉरवर्ड का आप हुआ है asan jinishi ko le jinur sama tadi ara dokai ci nane ci biasa bara chanyo da masakaro Allah rawas ko tidak ikam badya radun awal bari tapos kare we jelo sabara adam se bijak kulisha ko ne ona vendi waktu ya mangwali kare ini juga tahu ini sabamara da bijak jume ka khabar raga sabah jumada ya bala kita khabar raga o tasawwur al fa'il ashuriya dama da awas dara tashmin ke da ta na jikar nawe kana ko awu nake mutano patani shi da kushu kuma shi بلا خبر شو اللي في دارك كيسان كوسك تخلي ديك دراسة. So this is a horizontal force. If this horizontal force is enough to overcome the shear resistance, it would slide. And as you know from the mechanics, if you increase the weight or normal load, more horizontal force would be required, right? So these are the reactions. N is reaction to reaction, normal reaction, right? And T is the resistance to shearing, to sliding. Sliding and shearing are same thing. And we know from the mechanics that T is equal to N into tangent phi. What is phi? It is the angle, it is friction angle. It's called friction angle. It is between resultant and the N force here. T is equal to N tangent phi, right? You can know this from the trigonometry here. If you want to find T, it is N into tangent phi. And also you know from the mechanics, T is equal to mu into N. That is in your earlier semesters, where mu is coefficient of friction. Here we have replaced mu with tangent phi, friction angle. So more is the normal load
Greater is the shear resistance or resistance to sliding of the object past another object. What is N? N is the normal load which is perpendicular to the sliding plane. If slide plane is horizontal, N has to be vertical, right? If the sliding plane is inclined, N is the force that is perpendicular to that inclined surface. If you divide this equation by the sliding area, which is this one, you convert this equation from force to stresses. T would become tau and N would become normal stress into tangent phi. So that is tau is equal to mu sigma into tangent phi. If you draw a graph between these two variables, you see on the x-axis sigma, which is normal stress, tau is the shear stress, right? When sigma is 0, no shear resistance. Ideally, you would require no force to slide the object past another object if it is weightless. Ideally, this is the case. So, this is the graph, and the angle here between sigma and tau is phi. So, this equation is tau is equal to sigma into tangent phi. If you have any question, you can ask. सर ये रिलेशन टी और एन के दरमियान है, लेकिन जो एंगल लिया है वो फाई है जो कि एन और आर के दरमियान है सर। जी नहीं, बात एक है ना। देखें आप ट्रिग्नोमेट्री जरा देखें, यहाँ पे अगर आप टी डालें टी, ठीक है ना, तो टेंजेंट फाई किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस टी बाय एन, टी बाय एन के बराबर होगा क्या कि नहीं? जी सर। तो ये इक्वेशन है। अच्छा जी, अब आते हैं आगे। Coulomb theory of shear strength in 1776. It is based on the same concept. The equation is tau F, which is the shear strength of the soil, is equal to sigma F, which is normal stress perpendicular to the failure plane, into tangent phi. ठीक है ना? Plus C. Another term is added here, that is cohesion. What is cohesion? It is due to the cementation of the soil particles. Even if there is no normal load, still there is some shear strength in some type of soils, in some condition. So tau F is equal to C, which is cohesion, plus sigma F into tangent phi. This C is also called cohesion intercept, and this phi is called angle of friction angle or angle of shearing resistance. Both cohesion and friction angle together are called shear strength parameters of the soil. C and phi, cohesion and friction angle together, is called shear resistance of the shear strength parameters of the soil. So this is the equation. You see, these are the soil particles. If the slip plane is this, so sigma F is perpendicular to the slip plane, sigma F, and tau F is the shear resistance. If shear plane is horizontal, sigma F is perpendicular to the shear plane, and this is the shear resistance. This is the graph. If you plot it, sigma x-axis, tau y-axis. When sigma F is 0, tau F is equal to C. So you have a y-intercept and then a linear line. Angle is phi.
at any sigma f, the shear strength is a combination of cohesion C plus sigma f tangent phi. So the total is ta f. This is the total shear resistance. अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, this is another stress condition, sigma 1, sigma 1, sigma 3, sigma 3, and this is the shear plane, failure plane. This theta is the failure angle, right? This is not a line, this is a plane, right? Sigma f would be the one perpendicular to this shear plane and type the shearing resistance. So, modify Coulomb theory. There's a significant modification to the original Coulomb theory. The only difference is this, that instead of sigma f prime is used, which is the effective normal stress. So the stresses are represented in terms of effective stress, not in terms of total stress. And why is this? It is because it is the stress normal stress between the contact points that contribute to the resistance and not the total stress. Total stress is a combination of effective stress and pore water pressure. Pore water pressure doesn't contribute to any shear strength, right? It is the contact stress. It is the stress that is transferred from through the contact point from one particle to another particle that contribute to the shearing resistance. That's why instead of total effective stress, normal effective stress is used, and accordingly the phi prime and C prime are used. C prime and phi primes are shear strength parameter in terms of effective stress, or effective shear strength parameters. If you draw it, the graph is the same. The difference is on the x-axis you have effective stress and you have C prime effective cohesion and phi prime effective friction angle. So this is modified Coulomb theory, which is largely used nowadays. ओपन देखो विषय, बस सिर्फ देखिए कोटेशन पर दे वांशुली का ओवर डेट पे से वो सने देखा कुछ बस खाली दा कट कर और माता रीसेट खाली सर जी पूछे सर। जब हमारे पास वाटर सरफेस पे ग्राउंड सरफेस पे भी मूव कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जो वाटर है और जो नीचे ग्राउंड है इसके दरमियान शेयर स्ट्रेस होती है, तो यहाँ पर हमने शेयर स्ट्रेस को क्यों मतलब इग्नोरेबल किया है? मैं नहीं समझा क्वेश्चन पे सर। हम इस तरह हमने पढ़ा है कि जब वाटर ज़मीन के ऊपर भी मतलब वो फ्लो करती है तो जो वाटर है और जो ग्राउंड सरफेस है तो उसके दरमियान शेयर मतलब जो स्ट्रेसेस है वो होती है। लेकिन जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो आपने कहा कि हम यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस लेते हैं, पूरा वाटर प्रेशर जो है उसको इग्नोर करते हैं, तो मे भी यहाँ पर भी इसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगी ना सर पूरा वाटर प्रेशर की जो शेयर स्ट्रेस पर? नहीं यार, वो आप कुछ और चीज बोल रहे हो, ठीक है ना। दिस इज शेयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, दिस इज शेयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और वो जो है अगर वो हाइड्रोलिक में आपने पढ़ा होगा कि वाटर फ्लो करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना,
किसी ऑब्जेक्ट पे फ्लो करता है, ग्राउंड हो या कोई चीज भी हो, पाइप हो, तो इंटरफेस पे एक शेयर स्ट्रेस आता है, यही है ना। अगर उसकी कोई विस्कोसिटी है तो उसके मुताबिक वहां पे कोई स्ट्रेस जनरेट होता है, वो अलग चीज है। ये शेयर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। वो शेयर स्ट्रेस है जो कि लोड की वजह से आता है, और ये रेजिस्टेंस है, शेयर रेजिस्टेंस है सॉइल। ये अप्लाइड शेयर नहीं है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ है, एक स्ट्रेंथ होती है, एक स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस एक आपकी स्ट्रेंथ है कि आप कितना लोड उठा सकते हैं, मसलन आप 20 बैग उठा सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और किसी ने आप पे 3 बैग्स रख ली, ठीक है ना, तो ये अप्लाइड लोड है, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी? 3 बैग्स ओवर ना 20 बैग्स ओवर 3 बैग्स, ठीक। सर ये शेयर किस चीज की वजह से होती है? जी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सेल सर किस वजह से होती है, क्यों होती है ये? देखें, ये तो हर ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना। जिस तरह मैंने इससे पहले स्लाइड पे बताया, फ्रिक्शन होता है ना। जब उस पे एक पार्टिकल होता है, दूसरे पार्टिकल होता है, सेल्फ वेट की वजह से, ऊपर लोड की वजह से, दो पार्टिकल के दरमियान में जो नॉर्मल स्ट्रेस आता है, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है ना। आप 2 पार्टिकल ले लेना, बड़े बड़े पत्थर, और वो एक को दूसरे पे रखें और ऊपर वाले को आप धकेलें, तो वो आप कोई फोर्स उस पर लगेगी कि नहीं लगेगी? ये उसकी शेयर स्ट्रेंथ है। और जब उस पर लोड आ जाए, वो 2 पत्थर के ऊपर कोई आदमी भी खड़ा हो जाए, फिर आप उसको धक्का दें तो ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो जिस तरह मैंने आपको मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ा हो, ठीक है ना, उस पर जब नॉर्मल लोड जितना बढ़ेगा, आपको ज्यादा लोड की जरूरत होगी उसको स्लाइड करने में। तो बिल्कुल वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी है, ठीक है ना। ठीक। अच्छा जी, अब आते हैं आगे, इसी इक्वेशन को आगे ले जाते हैं। Let's solve a small problem on this. You try solving this problem yourself. The cos is power estimate is 5. No, आपका नंबर ऐसे referring to your letter and लेटर को रास्ता ले लेगा, लेटर क्या सर आगे डेट में हुआ जो का नया डाटा टिक हुआ था Es un bajo que tú सर सोए अच्छा मतलब कुछ एकदम तेरा ये पेड़ होगा नहीं शोर नहीं होता है। ये क्या आंसर आया? सर 113.036 113 sir. अच्छा, what is the shear strength in terms of effective stress on a plane within a saturated soil mass at a point where the total normal stress is 295 kilonewton per meter square and the pore water pressure is 120 kilonewton per meter square? The effective stress parameters of the soil for the appropriate stress range are C prime 12 kilonewton per meter square and phi prime is equal to 30 degree, right? So this is the equation to find the shear strength.
right, in terms of effective stress. That is modified Coulomb theory. Everything is given, only the normal stress is not given, effective stress. So you know that this is equal to total stress at a point and minus pore water pressure. And these values are already given. You put them, first find the effective stress and put it in this equation. That is equal to 113 kPa. Now let's discuss Mohr-Coulomb theory, the one that we would discuss in this course. There are some other theories like Tereska theory, von Mises theory, critical state theory, but the one that we would discuss are the Mohr-Coulomb theory, right? Mohr-Coulomb theory or Mohr-Coulomb failure theory or failure envelope. So let's discuss this. This is the equation, right, that defines the shear strength of the soil. And these are the parameters, shear strength parameters, right? So the blue line defines a safe zone. If the applied shear stress is within this area, right, applied shear stress, so that would be safe. Any point that lies on the blue line would fail, and any point that lies within this blue line would be safe, because the shear stress would be less than the shear strength, right? So if you consider a point A, tau, which is applied shear stress, is less than tau F. And what is the value of tau F? It is from here to this, and tau is from here to this point. Point B, if you consider point B, the shear stress is equal to the shear strength. So this is on the verge of failure. You consider it as failed. If you consider another point C, what do you think about this? Here, the shear stress, the applied shear stress, is more than the shear strength, right? So theoretically that's possible, but practically it's not possible, because before reaching to this level of stress, shear stress, the soil would have failed. So this signifies that anything within this below this blue line would be safe. On the blue line, it is on the verge of failure, and above this blue line, which is called a failure envelope, the soil would have failed before reaching this state. So this blue line, we can call it failure envelope. You can solve this example, right? Find the factor of safety against shear failure for the two stress states. Point A, this is the normal stress, this is the shear stress. Point B, this is normal stress, this is a shear stress, right? The soil shear strength parameters are C prime 20 and phi prime 30 degree. You try solving it yourself.
Invoice the project that's what doctor. No, assistant. YouTube. Email share sir. The subject of the was column or mail phone जी क्या आंसर आया सर मेरे पास तो लेस देन 1 है 0.77 और 0.5 अच्छा जी बहुत सारे वो क्या तो कभी मोबाइल से की 0.5, 0.9. जी हाँ So you plot this envelope and find the stress set at A. It is the shear strength is 77.7, right? And the shear stress is also 77.7. So the factor of safety is 1 for point A. For point B, the shear strength is 135.5. Here, this is the shear strength. The applied shear stress is 100 kPa, right? So factor of safety is 1.35. So point A is at the verge of failure and point B is safe. It has a factor of safety against shear failure equals to 1.35. In this example, you can note that at point A, the applied shear stress is 77.7. And at the point B, the applied shear stress is 100 kPa. At point B, the applied shear stress is more, yet it is safe. And applied shear stress at point A is less, but it is unsafe. So the conclusion is that it is not only the applied shear stress that defines whether a point in the soil mass the failure would occur or not. Rather, it is a unique combination of the normal stress and the shear stress that would define whether the point is safe or it is unsafe. समझ आ गई है? नो सर जी जी नहीं सर समझ नहीं अच्छा समझ नहीं आई देखें यहाँ पे आपके पास 77.7 kPa है
अप्लाइड शेयर स्ट्रेस, और शेयर स्ट्रेंथ जो है ना वो भी 77.7 kPa है। यहाँ पे आपके पास अप्लाइड शेयर 100 kPa, मगर ये ज्यादा है 70, मगर ये सेफ है। वजह ये है कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। शेयर स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस भी ज्यादा है, और जब नॉर्मल स्ट्रेस ज्यादा हो जाए तो शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको मतलब ये सिर्फ शेयर स्ट्रेस नहीं है क्राइटेरिया, बल्कि नॉर्मल स्ट्रेस भी है। दोनों मिलके आपको शेयर स्ट्रेंथ बताती है। क्योंकि आप देखें ना, शेयर स्ट्रेंथ जो है ना उसमें नॉर्मल स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से वो आपको बताती है कि इसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी। ये एनवलप है, ये आपको देख रहे हैं, ये लाइन है। ये लाइन जो है ना इसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ रही, जैसे ही नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ता है तो पॉइंट बी पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस ज्यादा है, 200 है, इसके मुताबिक आपका शेयर स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, 135.5 kPa, और अप्लाइड है 100। ठीक है ना, तो सिर्फ ये आपको कहीं कह दे कि एक पॉइंट पे आपके पास 100 है, दूसरे स्ट्रेस है, दूसरे पे 77.7 kPa है, तो कौन सा ज्यादा वनरेबल है? तो आपको शेयर स्ट्रेंथ निकालना है, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ पॉइंट ए पे डिफरेंट होगा, पॉइंट बी पे डिफरेंट होगा, उसके मुताबिक आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालनी है। ठीक, सर तो इस तरह तो फिर एक ही साइड के लिए मुख्तलिफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम निकालेंगे या क्या? हाँ, मुख्तलिफ, हर पॉइंट पे मुख्तलिफ होगी। तो फिर डिसाइड कौन सी करेंगे सर? नहीं वो हाँ, डिसीजन कैसे करेंगे, ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम के मुख्तलिफ होता है। मगर मसलन आपके पास एक स्लोप स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, स्लोप स्टेबिलिटी का, और उसमें एक सर्कुलर फेलियर सरफेस है, तो हर पॉइंट पे जो है ना एक्चुअली आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी वेरी होगी हर पॉइंट। ठीक है, तो अलोंग दी होल प्लेन आप एक ऐसी मैकेनिज्म हम लेते हैं, ऐसे अप्रोच लेते हैं कि एक एवरेज वैल्यू आ जाए। ठीक है ना, एक एवरेज वैल्यू आ जाए। इसमें फिर एक दूसरी चीज होती है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव फेलियर। प्रोग्रेसिव फेलियर मतलब ये है कि एक पॉइंट पे अगर फेलियर हो जाए, ठीक है ना, तो वो और लोड नहीं ले सकती, वो लोड दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाती है जो कि सेफ थी। ठीक है ना, तो वहां पे वो फेलियर काज कर लेती है। जब वो भी फेल हो जाए तो वो फिर तीसरे पॉइंट पे, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव फेलियर। तो ये हम जब स्लोप स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको किसी पॉइंट पे मालूम करना है कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेस क्या है, तो ये इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। डिफरेंट पॉइंट पे डेफिनेटली ये डिफरेंट होगा, और आप उस प्रॉब्लम के मुताबिक फिर फैसला करेंगे कि क्या होना चाहिए। ठीक, ठीक है सर। Mohr-Coulomb failure theory is, let's explain this, but before explaining this, let me show you some important parameters. This is a cylindrical soil specimen like the one that I shown in the previous slide. This is sigma 1 stress, this is sigma 3 stress. Sigma 1 is at top and bottom, and sigma 3 is all around the cylindrical surface, right? These are called major principal stress planes. These planes are called major principal planes. They are called major principal planes because they are only normal stresses are acting on these planes. There are no shear stresses acting on these planes. That's why they are called major principal planes, as you already know. And these stresses, sigma 1 and sigma 3, are called principal stresses. In this
we take sigma 1 as major principal stress and sigma 3 as minor principal stress. These stresses has caused a failure plane here in the specimen, and theta is the failure angle with the horizontal. On this plane, a failure plane, there are two stresses acting. One is sigma f, which is normal stress, and the other is tau f, which is shear stress. Right? So a failure has been caused there. So we can plot this as a Mohr circle. Sigma 1 as on the x-axis you have sigma prime, on the y-axis you have tau. So sigma 1 prime here and sigma 3 prime here, you draw Mohr circle. And Mohr circle, so far you have drawn as a circular Mohr circle, but I have drawn only the half circle because in solid mechanics only half of the circle is drawn. The reason would be in next slide. Now I want to locate the failure plane. So as you know that failure plane had an angle of theta with the horizontal, right? So you see on the Mohr circle, as you know that it would become 2 theta. So this is the failure plane. This is the failure plane. And the stress is here, the coordinates of stress, the coordinates on this circle here would be tau f. This is tau f, right? And this stress is sigma f, normal stress. So this is how a Mohr circle is drawn. समझ आ गई है? Sir, why it is 2 theta? जी जी सर ये 2 theta क्यों है? क्लियर? सॉरी, सर ये 2 theta क्यों है? 2 थीटा क्यों है? ये तो आप जरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की किताब उठाएं मैकेनिक्स की, उसमें आपको पता लग जाएगा क्यों है। ठीक है ना? सिंपल ये देखें ये वाला सिग्मा 1 और सिग्मा 3 जो स्ट्रेसेस थे ना वो 90 डिग्री प्लेन्स पे थे, एक दूसरे पे एक हॉरिजॉन्टल पे था, एक वर्टिकल पे था, तो दोनों प्लेन्स के दरमियान 90 डिग्री था ना। यहाँ पे देखें ये 180 डिग्री पे शो हुआ है, डबल है ना। तो इसी तरह ये प्लेन भी आपको 2 थीटा पे लेना होगा। जिस तरह सिग्मा 1 और सिग्मा 3 यहाँ पे 180 डिग्री पे है और स्पेसिमेन पे स्ट्रेस एलिमेंट पे वो 90 डिग्री पे थे, तो वो आपने 180 पे लिए। इसी तरह फेलियर प्लेन पे भी 2 थीटा पे लें। ठीक है ना? इसमें जब आप वो इक्वेशन स्ट्रेस की डिराइव करते हैं तो उसमें साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मोर सर्कल पे आपको एंगल्स को 2 थीटा लेना होगा। मोर सर्कल का फायदा ये है कि ये आपको मुख्तलिफ प्लेन्स पे 360 डिग्री प्लेन्स पे सब पे आपको स्ट्रेसेस दिखाता है। ठीक है ना? चूंकि हमें फेलियर प्लेन पे चाहिए तो ये फेलियर प्लेन की स्ट्रेसेस टा एफ और सिग्मा एफ। Now we draw the failure envelope. Oh, failure envelope. So if you draw a failure envelope on the same diagram, you see it would touch this point. Why it would touch this point? Because this is the failure plane. This is the failure plane. Failure has occurred, and as you know, if failure has occurred on this point, it must be on the failure envelope.
if there was no failure, the Mohr circle would be below this failure envelope. All the planes would be safe. But because failure has occurred on a single plane, so the point should touch, right, the failure envelope. All other planes, the stresses on all other planes are safe. You see, all other planes, no failure has occurred. So all the stresses, shear stresses, are below the failure envelope. Just at one point, it touched the failure envelope because a failure has occurred on this plane. You have any question, you can ask. सर अब ये जो फेलियर प्लेन है ये हमेशा 4 क्वाड्रेंट में ड्रा करती है, इसकी एनी रीजन सर? फेलियर प्लेन को कैसे ड्रा करते हैं सर? जो मतलब हाफ सर्कल आपने ड्रा किया तो इसकी जो 4 क्वाड्रेंट आती है इसमें आप फेलियर प्लेन को आप ड्रा करते हैं। अच्छा, 4th क्वाड्रेंट में ड्रा करते हैं। तो इसकी भी एक वजह ये 45 जो है ना 45 से ज्यादा होती है, क्योंकि इस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस आती है ना। अगर आप देख लें तो इस प्लेन पे स्लाइडिंग होगी, ठीक है ना। अगर दूसरा प्लेन लेते हैं तो वो बड़ा फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और सॉइल में ये 45 + π/2 आता है फ्रिक्शन एंगल की वजह से। अभी आप देखेंगे फेलियर प्लेन जो है ना वो 45 + π/2 पे आ जाता है। वजह ये है कि ये प्लेन जो है ना ये वीक होती है। इससे अदर प्लेन पे जाएंगे तो वहां पे आपका जो है वो एंगल इतना कम हो जाता है कि शेयर स्ट्रेसेस इतनी नहीं होती कि फेलियर हो जाए, ठीक है ना। और ये डिपेंड करता है आपकी सॉइल प्रॉपर्टीज पे। देखें इसमें अगर आपका फेलियर एनवेलप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता तो फिर आपका फेलियर पॉइंट कौन सा होता? अगर आपका फेलियर एनवेलप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता तो फिर क्या होता? फेलियर प्लेन पॉइंट पी सर, पॉइंट पी होता और वो 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। जब ये 90 डिग्री पे है तो फेलियर प्लेन किस डिग्री पे हो गई? 0 45 डिग्री। और 45 से कम तो हो नहीं सकता ना। आप यहाँ पे देखें ना फेलियर एनवेलप जो है वो ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल हो सकती है, ठीक है ना। अब इंक्लाइंड है ना, बढ़ के ये सिर्फ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल ही तक जा सकती है, ठीक है। तो आपका फेलियर एंगल जो है ना वो कम से कम 45 डिग्री होगा, उससे कम नहीं हो सकता। सर जो हमारे पास सी है मोर सर्कल का जो सेंटर है सर, ये हम इस ग्राफ पे किस तरह लोकेट करेंगे? यार ये तो आपको आना चाहिए ना, ये तो आपने मोर सर्कल ड्रा नहीं किए कभी? एक्सक्यूज सर, मोर सर्कल कभी ड्रा नहीं किया आपने? ये σ1 + σ3 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास OC आ जाएगी। σ1 + σ3 डिवाइड बाय 2। एक 5 मिनट ब्रेक ले लें फिर आगे जाएंगे। सर जी पूछें। सर ये फेल्यूर आपने कहा कि 45 डिग्री से कम नहीं होती, फेल्यूर एंगल तो सर फ्लाइट उस पे डिपेंड नहीं करती। किस पे? फेल्यूर एंगल जो होती है सर, आपने कहा 45 डिग्री से कम नहीं हो सकती। जी सर ये तो स्ट्रेसेस पर डिपेंड नहीं करता, अगर स्ट्रेसेस कम हो या ज्यादा हो चेंज होगी ना, तो 45 से कम क्यों नहीं हो सकती? नहीं बेटा देखे ना, इसमें ये फेलियर एनवेलप आपको नजर आ रहा है। फेलियर तो जब होगा जब मोर सर्कल फेलियर एनवेलप के साथ मिल जाए, ठीक है ना।
तो वो इस केस में देखें 45 से ज्यादा है। फिर अब आपका अगर ज्यादा से ज्यादा फेलियर मतलब हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल हो जाए तो पी के तो वो 45 हो जाएगा, और तो कोई सिचुएशन नहीं है, और केस अरेज ही नहीं होता। सर ठीक है ना, ठीक है सर। सर एक 5 मिनट ब्रेक देते हैं, फिर शुरू करते हैं। और इस तरह ना बोलो ना kita makin susu ko dan pakai susu dulu ni. Terpakai. Harus animated. Dan ini betul. Kamu beli dah pura. Kita karena ना गाने agak mana ऐसे कुछ पकार देगा Dah mau usah apa terakhir kau. Kalau pakar cidari ini lain din dal tadi actually double slide taraf तो कुछ आओ kan lagu जैसे कड़ी नचीरी aku mau sih Dah don't this tadi pikir. नचीरी Orang change teman kali betul. ada tik ada pati जैसे ada Dah pikir. ini fiction Siap mau lagi wastu Sige. Ano? Milaw siya. Mobile. Nah, tahu mobile number atau. Milaw siya mobile. Kabar lecture kan ini lecture berdekat. वक्त में जो इक्वेशन फॉर्म के लिए कोई बार एडिट किया दो ना पीपीटीएक्स फॉर्म पे एडिट की गई जी इक्वेशन फॉर्म की मैं मत के लिए कुछ है ना मैं एडिट के दो ना चाहता हूं तो एडिट की इक्वेशन फॉर्म की मैं जमा ओली का कनाडा लिख दी मैं बाबा एडिट के दो ना एडिटेबल बनो Okay. उस एडिटेबल आपको लिए हम लोग का ही सकता है लेकिन फर्क तो होता है registration रजिस्ट्रेशन पर ये नंबर कितना वाट है दलता खुदा वो कितना दे तो नॉर्मल लॉगिन रोल है जो काम और पासवर्ड दे बल खबर है दा माय वो 20 खुदा है खुदा ना दा इंडिया انا بس دو كنا شاهنا ربنا बस यूं क्यों اه يوي نفس الفكره نمبر يوي سر हाँ अलबत्ता ज़रा फिल्म का एड्रेस चेंज करे थे हाँ उनके नंबर है एड्रेस चेंज कर हम अप्लाई पर एड्रेस हम चेंज कर दादा होता बाकी لا يمكن नंबर पता है kasi tangkin kana kung tangkin be kana yun ang warte kana tangkin na umdawin kana ito usan yung kinaro ka
Nada más ranista, es como de dar. Normal way dar uzi da na website na. Da documents हम पता सो हार्ड ड्राइव बाच हुई है. वो तो यूज करना है आपको ड्राइव की सिर्फ यो पीसी रजिस्ट्रेशन होते दा अपना वो निश्चित पता. That's what you explain. Oh, that situation, ना? उतना पता मुर्गे triangle थी इसके. ये मैं रखा यूज करे थे. A C O F O C वाला मतलब इंग्लिश करेंगे बस. दिन थीटा था सिंगर उससे थीटा कुछ ना लेकिन. जब 2 थीटा दिखा ना जब 180 minus 2 थीटा सी सी. बड़ा लो. बस मतलब मुझे that triangle ऐसे रेड कलर के दिया है. नाम अच्छा जी, आप मौजूद हो? हेलो. मौजूद. अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं. सो जी पूछें. सर कॉल मैकेनिक्स में सॉरी एमओएस में हमने ये देखा था ना कि कभी कभी मोहर सर्कल का रेडियस इतना बड़ा हो जाता था कि वो हमारे पास नेगेटिव साइड पे चला जाता था. तो सर फिर वो इस इधर भी ऐसे होता है कि नहीं यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव साइड पर ही रहता है? नहीं, ये पॉजिटिव साइड पे होगा. वो तो टेंसाइल फोर्सेस हो तो फिर होगा ना. ठीक है ना. तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस हैं. ठीक और है. सर कोई जी अगर जी रेडियस इस तरह आ जाए कि हमारे पास ये जो फेलियर एनवेलप है उससे जो है ना 45 डिग्री पे जो है ना वो बाहर चला जाए उधर से, तो फिर वो तो नॉन प्रैक्टिकल साइड पे चला जाता है ग्राफ पे, तो फिर उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 45 डिग्री से क्या हो जाए? जैसे हमारे पास फेलियर प्लेन जो है वो 45 डिग्री से मतलब वो ऐसे रेडियस आ जाए कि वो ये फेलियर एनवेलप से मोहर सर्कल बाहर चला जाए. नहीं, मोहर सर्कल बाहर नहीं जा सकता. अभी मैं बताता हूँ आपको. ये अभी इससे नीचे स्लाइड पे आ रहा है. So if Mohr circle, this is a failure envelope. Here it is shown a bit curved, but it could be straight, and in some cases it could be curved because at higher stresses the particle crush and it become a bit flat, right? But you don't consider this. What is my point of focus is this: Mohr circle A lie wholly below this failure envelope, so all planes are safe, right? This Mohr circle just touches at one point the failure envelope, so failure is caused just on this one plane. And Mohr circle B is not possible because it is crossing at 2 points, and some points lie above the failure envelope. So these stress states are not possible. So such kind of condition is not possible, that Mohr circle is above the failure envelope, because this would signify that some points have taken more stress than the shear strength, right? So the Mohr circle must touch, if the failure envelope tangentially, all Mohr circle must touch the failure envelope tangentially if a failure has occurred, right? And if there is no failure occurred at any plane, the Mohr circle would lie below the failure envelope. जी, समझ आ गई है? Yes, sir. This is
we only draw the top half of the Mohr circle. So there is a bit of explanation, right? Why just we draw the top half? Theoretically, there should be two failure envelopes, one above and one below. Both are tangent to the top one should be tangent to the top Mohr circle. The bottom failure envelope should be tangent to the bottom part of the Mohr circle. These are the failure planes. You see, these are the ideal failure planes, and there are other failure planes which are perpendicular to these failure planes, right? So there is a net of failure planes. So it signifies that two failure planes, they both should be one perpendicular to one another. But practically, this is not the case, because you have failure plane. This is homogeneous, ideally homogeneous soil, but ideally such condition doesn't arise. There is a single failure plane, right, defined by only the top Mohr circle and failure envelope. So that's why in soil mechanics we only draw the top of the Mohr circle and the top failure plane. So this again the same. This is a safe Mohr circle. All stresses on the failure plane are safe on all planes. And this failure has occurred just at this plane, represented by this point, and a circle above this is not possible, right? Because it signifies some stress condition which are above, which are more than shear strength. Now let's derive G. सर ये हम हाफ सर्कल इस वजह से ड्रा करते हैं कि हमारे पास जो फेलियर प्लेन हो वो एक होता है सर सोइल के केस में। जी वो मतलब ये कि आइडियल इस तरह होता है कि फेलियर प्लेन जो है ना, आइडियली वो एक नेट की सूरत में होते हैं, ठीक है ना। जो फेलियर प्लेन एक एक्सिस में होता है वो फेलियर प्लेन उसके परपेंडिकुलर भी आता है, ठीक है ना, आइडियली उसी डायरेक्शन में। मगर प्रैक्टिकली जो है ना वो इस तरह नहीं होता, वो एक डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फेलियर प्लेन है जो 60 डिग्री पे है, ठीक है ना, जो क्रिटिकल है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, तो दूसरे एक्सिस पे भी फॉर एग्जांपल ये है 60 डिग्री पे है, फॉर एग्जांपल ये एंगल, ठीक है ना, तो एक एंगल बिल्कुल इस डायरेक्शन में भी 60 पे आ सकता है हॉरिजॉन्टल के साथ आइडियली, ठीक है ना, मगर प्रैक्टिकली वो इस एक डायरेक्शन में आता है, इसलिए हम सिर्फ हाफ ड्रा करते हैं। Now let's derive a relationship between sigma 1 and sigma 3 and shear strength parameter, and that equation we would call it Mohr-Coulomb failure criteria, right? So what are sigma 1? These are the principal stresses, sigma 1 prime, sigma 3 prime, and C phi are the shear strength parameters. So how we can find sigma 1 or sigma 3 if we know the shear strength parameters, right? We want an equation, and let's derive that equation. So this is a Mohr, this Mohr circle represent this these stress condition, sigma 1 prime, sigma 3 prime, right? And this is the point of failure oriented at angle 2 theta. It is meeting the failure envelope because a failure is caused on this failure plane. The normal stress on this failure plane are sigma f, and the shear stress is tau f, or shear strength is tau f, right? So this is failure envelope, this is cohesion, and this is friction. This is the Mohr circle, and it is just touching the failure envelope,
because a failure has caused. C is the center of the Mohr circle and F is the point of tangency, right, where the fill in verb is tangent. So this is the point which represents the failure. So what we want to do, you see, this is oriented at angle 2 theta. This is tau f and this is sigma f, right? What is CF equal to? CF is the radius of the Mohr circle, right? Radius of the Mohr circle and diameter of the Mohr circle is sigma 1 prime minus sigma 3 prime. So radius would be equal to sigma 1 prime minus sigma 3 prime divided by 2 is equal to CF. समझ आ गई है इसकी? समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब टा एफ आप मालूम करें इन टर्म्स ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के इस ट्रायंगल से यू फाइंड टा एफ, इक्वेशन ऑफ टा एफ। करें, खुद करें। इधर से भी बराबर का करना। No, non da si che serve, serve. No, singa rectify. This is your search work. Gora. Draft. Construction joint. Huh? Retrofit. Ooh. Rosa. Agora será verdade. Normal, até o café. Vamos dar zoom. Mas o website ne sarei o office ta gosh. Dia ke office ke street shop. Website ke par. Aga mana process ke. FBR Na ke prawa. Da o family. and 20 आओ देना पड़ता है। देना नमक कौन डालते हैं? जी क्या आ रहा है आपका? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही। क्या आ रहा है? ठाफ सर हल कर रहे हैं। इतना लंबा तो नहीं है सर बेटा। मेरे पास तो cos 2 थीटा minus 90 into r cos 2 थीटा minus 90 cross r। सर TF is equal to 1 by 2 sigma 1 dash minus sigma 3 dash is equal to cos 5 dash. cos 5 dash Yes sir. नहीं यार, सर ये जो एंगल है ना सर, ये 5 डे जो है सर, ये जो C से F तक है ये इसको परपेंडिकुलर है, जो BF है ये मतलब जो हॉरिजॉन्टल है इसको परपेंडिकुलर है, जो तो जो O BF और FC के दरमियान जो एंगल है वो 5 नहीं होगा सर इस तरह, मतलब वो मैकेनिक्स में सर एक्सप्रेशन पढ़ा था। बिल्कुल ये पाई के बराबर है, ठीक है। यस सर, तो फिर इसमें यहाँ पर 5 डैश पुट किया है, वो काज पे सॉल्व किया है। अच्छा, नहीं आप फाई के फॉर्म में न लाए ना, थीटा के फॉर्म, फाई थीटा के फॉर्म में ले आए। थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, bring it in terms of theta. सर cos 2 थीटा minus 90 क्रॉस r ये नहीं होगा सर?
90 नहीं है ना. Let me show you. So BCF is, this angle is 180 minus 2 theta. 180 minus 2 theta. If you take sine of this, it will be equal to perpendicular, which is tau f, divided by hypotenuse, which is the radius. So if you use this relationship, tau f is equal to 1 over 2 sigma 1 prime minus sigma 3 prime, which is the radius, into sine 180 minus 2 theta, and sine 180 minus 2 theta is equal to sine 2 theta. So the equation of tau f is this. समझ आ गई आपको? यस सर. सर हमने इस तरीके से किया, जो एफ पर एंगल बन रहा है सर वो 2 थीटा माइनस 90 होगा, और फिर अगर साइन का फार्मूला यूज करें. नहीं, एफ पे एंगल 2 थीटा माइनस 90 नहीं बनता सर. नीचे सी पर ओवरऑल जो एंगल है वो 2 थीटा है. जो अगर हम एक परपेंडिकुलर लगाए तो ये जो एंगल होगा वो 2 थीटा माइनस 90 होगा, और ये एफ पर अच्छा अल्टरनेट चले, एंगल है. वो भी ठीक है, चलो ठीक है. अब आप सिग्मा एफ मालूम करें. सिग्मा एफ जरूरत है. हाँ, Sir, in term of phi dash या theta? थीटा. दिस विल बी इक्वल टू, देखें, OC माइनस BC. OC AC, ठीक है ना, माइनस BC वुड बी इक्वल टू सिग्मा एफ प्राइम. Azam suwela naman. English siguro. Sakol mo dito. Para siwela English na wati. Okay. Nakam channel. Sige, that's the start particularly. Material and design. No, خلينا تلاقوا ورا كذا HEC ويب سايت के ورا كذا प्लैटिनम दे गोल्ड दे कम नो करा जी. आई की मालूमात का HEC के लिंक थे जनरल नंबर के कहना ताले दाव كذا गोल्ड दे प्लैटिनम दे सिल्वर दे सब बताया. जी क्या रहा है? Sigma 1 plus sigma 3 divided by 2 minus sigma 1 minus sigma 3 divided by 2 into cos 180 minus 2 theta. So OC is the center of the Mohr circle, equal to sigma 1 prime plus sigma 3 prime divided by 2, ठीक है, minus BC is cos. Here you use sine, but here now you would use cos theta for to find BC. BC would be equal to radius into cos 180 minus 2 theta. Put them into equation. Now cos 180 minus 2 theta is equal to minus cos theta 2 theta, right? So the equation would become this. So now you can find tau f and sigma f prime, right, from this equation. If you know sigma 1 and sigma 3, which are the applied stresses, but the thing is this, you don't know theta. What would be the value of theta? So you, from trigonometry, you can find what is the angle of theta in terms of phi, because you know the friction angle of the soil from the test.
Using phi, you can find theta from this triangle. So you try finding it, theta in terms of phi. Sir, phi is equal to 2 theta minus 270. G? Phi is equal to 2 theta minus 270. नहीं, थीटा को इन टर्म्स ऑफ पाई निकालें, मगर ये नहीं है, गलत है। Sir, 45 plus 5 by 2. जी 45 plus pi by 2. जी जी बिल्कुल। Use now we want to represent theta in terms of phi. So in this triangle, you see this angle at C is 180 minus 2 theta. Okay? So if you, and this is 90 degree, and this angle is equal to phi. You will see this angle is equal to phi. You see, because look, this line CF is perpendicular to failure envelope, and this horizontal, and these are vertical, so these angles should be equal. So this is phi, and this is 180 minus 2 theta, and this is 90. The summation of these three angles should be equal to 180 degree. From this relationship, you can find what is the angle of what is the relationship. So the relationship slide move all over baran monaka uzmasuk depois bada basta easy for recording अब आपको स्लाइड नजर आ रही है? Yes, sir. अच्छा जी, अच्छा जी, तो देखें इस रिलेशनशिप से आपके थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस फाइव बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना? अब आते हैं मजीद इसमें जाने डेरिवेशन के लिए। ये ट्राइंगल जो है ना, ये इन्वॉल्व मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस करता हूं, ये पॉइंट ओ के साथ मिल जाता है। ये एंगल भी 5 डिग्री है, ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है ना? अब मैं जी अब देखें इस बड़े ट्राइंगल में जो कि OFC है, साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा वुड बी इक्वल टू, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है ना? तो साइन थीटा वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज द रेडियस डिवाइडेड बाय द होल hypotenuse, this hypotenuse
because this is in front of 90 degree. Hypotenuse is equal to OA plus AC. We already know AC, right? OA would be equal to, from this small triangle, from this small triangle, OC would be equal to C cotangent phi. यहां तक समझ आ गई आपको? जी सर। C cotangent हम रागो टूल रहा उसे पर स्टूडेंट माल को। तो साइन थीटा किसके बराबर होगी? साइन थीटा वुड बी इक्वल टू रेडियस डिवाइड बाय द होल बेस OC, which is the summation of this 1/2 sigma 1 plus sigma 3 plus C cotangent phi. So sin phi prime in the bigger triangle, the red triangle which is shown, is this divided by this. यहां तक समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करें। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 वुड बी इक्वल टू दिस, क्योंकि कोटेंजेंट जो है ना वो कॉस ओवर साइन के बराबर होता है। तो ये आपके पास ये आ गया। और अब मैं सिग्मा 1 को एक साइड पे लाता हूं तो इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। इसमें देखिए ये दिस 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाय 1 माइनस साइन फाई है, वो डिवीजन का साइन नजर नहीं आ रहा। 2c प्राइम इज इक्वल cos फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई, तो ये इक्वेशन आ जाती है। और इस क्वेश्चन इसको मजीद सिंप्लीफाई के लिए ये 1 प्लस साइन फाई और 1 माइनस साइन फाई इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस फाई बाई 2, और ये है 2c टेंजेंट 45 प्लस फाई बाई 2। तो दिस इक्वेशन दैट वी derived is called Mohr-Coulomb failure criteria. It has related sigma 1 and sigma 3, which are the major principal stresses, with shear strength parameters which are cohesion and friction. समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा, इसमें ये नोट करें कि ये इक्वेशन जो हमने डिराइव किया लास्ट, this is only applicable when Mohr circle touches the failure envelope, failure condition. क्योंकि हमने जब ये डिराइव किया है तो इस बेस पे किया है कि मोर सर्कल जो है वो फेलियर एनवेलप के साथ टच कर रहा है। अगर मोर सर्कल फेलियर एनवेलप से नीचे हो तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, ना ही आप कोई कुछ चीज डिराइव कर सकते हैं। वो एक इनडिटरमिनेट स्ट्रेस कंडीशन है। तो जब आप ये इक्वेशन अप्लाई करोगे तो मेक श्योर दैट फेलियर इज कास्ट और फेलियर इज अज्यूम्ड। समझ आ गई आपको? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, अगर कोई स्ट्रक्चर मतलब फेल नहीं हुआ हो और हम उसके लिए assumption कर रहे हैं तो ये फिर किस तरह मतलब होगा? क्या क्या होगा? सर, अगर कोई स्ट्रक्चर मतलब फेल नहीं हुआ लेकिन हम चाहते हैं कि ये कब फेल होगा, तो फिर इसके लिए मतलब ये अल्टीमेट जो आपने इक्वेशन नीचे लिखा है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें पुट करोगे, एज्यूम करोगे फेलियर हो गया है फॉर एग्जांपल, तो आपको सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और जो फॉर एग्जांपल एक सॉइल स्पेसिमेन है, आपने एक सिग्मा 1 और सिग्मा 3 अप्लाई किया है, ठीक है ना, मगर फेलियर काज नहीं हो रहा। आप चाहते हैं कि मैं कौन सा सिग्मा 1 अप्लाई करूं कि फेलियर हो जाए, तो ये इक्वेशन आप इस्तेमाल करें, इससे आपके पास सिग्मा 1 की वो वैल्यू आ जाएगी जिस पे फेलियर काज हो सकती है। ठीक सर, ये सिग्मा 1 डैश प्राइम को हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कह सकते हैं? आप कह सकते हैं, यू कैन सी, बट दैट डिपेंड्स ऑन सिग्मा 3 एज वेल। ये जो है ना, जो लेटरल प्रेशर है उस पे भी डिपेंड करता है। इस पे हम एग्जांपल 2 साल कर लेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा आपको इंशाल्लाह आफ्टर योर मिड टर्म। चलिए,
अटेंडेंस दे दें आप, ठीक है, अटेंडेंस दे दें और फिर लीव कर जाएं। सर पेपर बसेंगे आसान है कि गिराना?